Okay, fine. So shall we start with the lecture? Now say here is the problem. It is a hinge end, it is a ruler, and it is a three-member frame AB, BC, and CD. These are the three members. Okay, fine. So these are the three members. Let inform your other members also, the batchmates also to join the lecture fast. What do we do? The very first is we determine the support reaction. Suppose I assume as it is a ruler, I assume a vertical reaction. It is a hinge, I assume a vertical reaction at A, and let's say this is the horizontal reaction at A. So the first step is we determine the support reactions, right? So how do we determine support reactions? There are three unknown. The system is externally in equilibrium. From the concept of external equilibrium, I use three conditions: sigma fx is equal to 0. If I use sigma fx is equal to 0, HA is acting right. This 12 is also acting right, so it is on the same side, is equal to 0. So it means that HA I have got is equal to minus 12 kilonewton. It means that my assumed direction is wrong, it must be in the opposite. That we will do at the end. Next you do sigma Fy is equal to 0. If I do sigma Fy is equal to 0, this VA plus VD acting up, there is no other vertical or inclined force acting, so is equal to 0. There are two unknowns in this equation, we cannot have. Next you do sigma moment is equal to 0 about any plane, any point in the plane. Say I take moment about A, because the two of the forces will be passing from here. HA and VA will get eliminated from the equation. We will have moment of this VD, and this is the only other force acting, is equal to 0. So because of this VD is anti-clockwise, VD multiplied by the distance is 3 plus 1.5 plus 1.5. This total is 6. It is anti-clockwise, must be equal to the clockwise moment. This vertical distance is 4. This is the line of action of force 12, and this vertical distance is 4. So the moment is clockwise, 12 multiplied by 4. So 4 ones are, 4 twos are. The value of VD is equal to 8 kilonewton. If I have got the value of VD is equal to 8 kilonewton, now putting this equation here, you will get value of VA is equal to minus 8 kilonewton. Is it okay? So this is how we can have the support reactions. Is it right? Is somebody solving in parallel to me? So we can have the support reactions. These are the support reactions. HA, I had assumed acting right. I have got minus value. It means that HA is not acting right, but the HA is acting left. So it means that here there is a force of which is acting left, and it is of 12 kilonewton. Right? VA, it was assumed as acting up. I have got minus 8. It means that it is not acting up, but this is acting down, and it is of 8 kilonewton magnitude. So I need not to write minus here because I have changed the direction. HA I had assumed right, but I have got minus value. It means that it is not acting right, but that has to act left. VD, I have got positive value. It was assumed up, and I have got positive value. It means that this assumed direction is right. So this is 8 kilonewton. So very first step is determining the support reactions. Is it okay? The support reactions are determined. What do we need to do next after determining the support reactions? Now I will show the correct directions here. I know these reactions. So this is VA, say this is HA, and here is this force. What is the next step? We need to sketch the free body diagram of three parts. There are three members, AB, BC, and CD. Say this is the free body diagram of AB. Suppose here I sketch the free body diagram of the second member. So here I sketch the free body diagram of the third member. Say this is member AB. A, B. What is the force acting here? 12 left. What is the force acting here vertical? 8 down. What about here? Say I assume up and left. Suppose. Say this is HB
This is VB. Suppose I assume clockwise MB. जो भी negative आएंगे, we will keep on changing. Because this is a rigid joint. If I want to break the member there, then at the rigid joint, I have to introduce three reactions: vertical, horizontal, and a moment. So this is moment is MB, and this horizontal is HB. Whatever I have considered here, right, for this member AB, when I am sketching the another member BC, I have to sketch the same forces but in the opposite direction. I don't know the reactions and the magnitudes, the magnitude and the direction. I assume these directions. अगर पॉजिटिव आंसर्स आते हैं तो these assumed directions are right. अगर नेगेटिव आंसर आते हैं तो these assumed directions are wrong. Those must be in the opposite. So we will see. HB मैंने लेफ्ट अज्यूम किया है, so here I must consider that as right. VB मैंने अप अज्यूम किया है, so here I have to consider that VB as down, because this is the same joint B. यहाँ मैंने clockwise movement लिया है, so here I have to consider anti-clockwise movement, because when I will join the two, the net at joint B must be zero, because there is no external force acting there. The net internal forces must balance each other. This is member AB. This is member BC. At C, as I am breaking the joint into CD and BC, so at C, as it is a rigid joint, so three forces must be there. Say this is HC, say this is BC. Suppose I am considering a clockwise movement here, MC. I don't know the directions. ये मैंने ऐसी randomly assume किया. Let us see. या नहीं तो हम लॉजिकली करेक्ट भी सोच सकते थे कि क्या हो रहा है, बट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल, यू अज्यूम एनी डायरेक्शन. जो पॉजिटिव आएगा ठीक है, जो नेगेटिव आएगा अकॉर्डिंगली वी विल मेक द चेंजेस. बीसी आई हैव अज्यूम्ड अप, सो इट इज टू बी डाउन. एसी आई हैव अज्यूम्ड लेफ्ट, सो हियर देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ एसी राइट. I have considered movement clockwise here, so I have to consider a movement anti-clockwise MC. When I will join the two, these internal forces will balance each other, but there is an external force also acting at the joint. If this 12 kilonewton is acting at this joint, either that we have to show at the joint B in member BC or in member CD. ये जो 12 किलोन्यूटन है, ये जो जॉइंट पर एक्ट हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस तो एक दूसरे को सब बैलेंस कर लेंगे, बट when these forces will balance each other, the net force at C will be zero. But there is an external force acting here 12 kilonewton that has to be shown either at this joint C or here at C. अगर कोई मेंबर पे रहता तो जैसे इससे पहले की प्रॉब्लम सॉल्व किया है, in all those cases the force was acting at the member, so we show the force at the member. But here the force is acting at joint C, तो मुझे या तो यहाँ बताना पड़ेगा या यहाँ बताना पड़ेगा. So that when I will join the two, all these internal forces will balance each other and there will be only this 12 kilonewton force left, because all these will balance. तो मैं उसको यहाँ सपोज ये बता देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर पे 12 in the same direction as it is. Now this is CD and here there is a force of 8 kilonewton acting up. Is it all right? सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हिंज था, ये रूलर था. This hinge is replaced by two reaction, ruler is replaced by one reaction. I have determined the reactions. ये मुझे रिएक्शन पता चल गया है. That was step 1, support reaction. फिर step 2 क्या रहेगा? Separate the element into number of components. How many are the members? There are 3 parts: AB, BC and CD. Break it into 3 parts. देखिए 3 पार्ट रहेंगे. AB, यहाँ के forces known है, those I have shown here. This is a rigid joint, so there must be 3 forces: a horizontal, vertical and a couple. So I have shown here. फिर BC, it is the same joint B. Whatever I have assumed here, here I will consider opposite of that, so that when I will join the two, the net force here must be zero. All internal forces will balance each other. There is no force acting on this member. There is no force acting on this member. Now BC, फिर मैंने यहाँ के C के मैंने forces assume किया है at this joint, rigid joint it is SC, BC and MC. यहाँ जो भी consider किया, यहाँ उसका opposite किया. SC is left, so here SC is right. BC is up, so here BC is down. Here moment about C is clockwise, so here moment about C is anti-clockwise. When I will join the two, ये सब internal forces will balance each other, but there is the external force of 12 kilonewton acting here, so that I have to show either at the joint C here or here. So this 12 is shown. I have shown that on this horizontal member.
अगर जॉइंट पर कोई फोर्स एक्ट होता है तो या तो ये मेंबर में लेना पड़ेगा या तो ये मेंबर पर लेना पड़ेगा. आई हैव कंसीडर्ड दैट ऑन मेंबर बीसी. अगर आप सीडी पर भी कंसीडर करते थे, नॉट हियर बट हियर, आपको आंसर सेम ही रहेगा. डोंट वरी. नाउ यहां पर जो मैंने एससी बीसी और एमसी अननोन लिए, यहां पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लिए, सो दैट व्हेन आई विल जॉइन द टू, द इंटरनल विल बैलेंस ईच अदर, एंड दिस 8 kilonewton was known. Okay, fine. Step 1, determine support reaction. Determine, break the member into components. So the member is break into the structure is break into the number of members or the components. All the rigid joints we have replaced by suitable forces. Now what we have to do? We have to consider the equilibrium of each member separately. I will consider equilibrium of AB. Right? How many are the unknown? 3. मैं या तो ये मेंबर से शुरू करना चाहिए AB, या मैंने CD मेंबर से शुरू करना चाहिए. Because here there are 3 unknowns. I can determine 3 unknowns using sigma fx, fy and moment. यहाँ पर 3 unknown है, horizontal, vertical and moment. I can use 3 equations and I can determine this. मैं ये मेंबर BC से स्टार्ट नहीं करना चाहिए because there appear to be 6 unknowns and using 3 equations 6 unknowns cannot be determined. तो मैं ये मेंबर सॉल्व करूंगा, उसके बाद either you solve this or this member and you will get the required unknowns. What are the required unknowns if you will see? The required unknowns are HB, VB, MB, HC, VC, MC. These are the unknowns. The rest of all are known. These are the unknowns. There are 6 unknowns. इसके इक्विलिब्रियम के लिए 3 इक्वेशन है, इसके इक्विलिब्रियम के लिए 3 इक्वेशन है, इसके इक्विलिब्रियम के लिए 3 इक्वेशन है. So if you will see, in all there are 9 number of conditions available. लेकिन हमको सब 9 conditions use करने का जरूरत नहीं है. We can get the required unknowns. As the unknowns are 6, we can use 6 equations. I will prefer to start from this AB. उसके बाद या तो मैं BC solve करूंगा या तो CD solve करूंगा. I will get the required unknowns. Okay, suppose I am solving for AB. What I will get if I do sigma fx is equal to 0. So the leftward forces I am equating with the rightward forces. Vertical और couple आएगा नहीं वो equation में. So 12 is acting left. HB is also acting left. Is equal to 0. So HB is equal to minus 12. I will not change at this state. HB is equal to minus 12. I have got one of the unknown. Now do sigma Fy is equal to 0. What I will get from sigma Fy 0? This 8 is acting down. This VB is acting up. So 8 is equal to VB. ये नहीं तो कैसा रहेगा? minus 8 plus VB is equal to 0. So VB is equal to 8 that way. So this is positive. So assume direction is right. This is 8 kilonewton. This is minus 12 kilonewton. Now do sigma moment is equal to 0. We can take moment about any point in the plane. Say suppose I am taking moment about B. So there will not be any moment of this VB and HB. There will be moment MB and moment because of these two forces. Now clockwise and anti-clockwise moments. See, because of this 12, अगर यहाँ पर एक फिंगर रखते हैं और इसको घुमाते हैं ऐसे, so it is clockwise moment. ये MB भी clockwise है, those will get added. And because of this 8, because this is the line of action of force, here is the perpendicular distance, so this moment is anti-clockwise. So moment of this 8 will be anti-clockwise and moment this MB and because of the 12 are clockwise. So clockwise moments are to be equal to anti-clockwise moment. So moment about B is equal to 0 I am doing. अगर moment is equal to 0 लिख रहा हूं तो clockwise moment I am equating with the anti-clockwise moment. So it is 12 multiplied by 4. This is the 4. Here is the perpendicular distance plus MB because the two are acting clockwise is equal to because of this 8 it is anti-clockwise 8 multiplied by 1.5. So I will get the value of MB is equal to 1236. So it is minus 36 kilonewton meter. Minus 36 kilonewton meter. मैं अभी चेंज नहीं करूंगा. पहले मैंने सपोर्ट रिएक्शन पूरे डिटरमाइन किया और सपोर्ट रिएक्शन को यहाँ पर स्केच करके चेंज कर दिया. अभी मैं जब ये मेंबर सॉल्व कर रहा हूं तो फर्स्ट आई विल डिटरमाइन ऑल द रिक्वायर्ड अननोन्स एंड देन आई विल डू. नाउ इफ आई टेक दिस मेंबर, अब ये भी ले सकते हैं BC आल्सो वी कैन टेक बिकॉज़ these three are known now. तो these are the only three unknowns. अगर नहीं तो हम ये सॉल्व करते हैं. CD
So from equilibrium of CD, what I will get from the equilibrium of CD? अभी MC, HC, BC, these are the three unknowns. Do sigma fx is equal to 0. If I do sigma fx, H is acting right. There is no other horizontal or inclined force acting. So this HA must be equal to 0. Do sigma Fy is equal to 0. So what I will get then? VC is acting down and this 8 is acting up. So VC is equal to 8. नहीं तो क्या रहेगा? Minus VC plus 8 is equal to 0. Take that VC to the other side. So VC will be equal to 8. It is like that. Now do sigma moment is equal to 0. I will take sigma moment about C. So that these are the two forces which will be passing here. And see, this moment MC is anti-clockwise, and because of this 8 also the moment is anti-clockwise. So the both will be in the same direction. So MC need not to worry about any distance for that because it is already moment. Moment of this 8 kN, 8 is acting here, here is the perpendicular distance. And this distance is equal to 1.5. So it is plus 8 into 1.5 is equal to 0. So MC is equal to minus 12. So it is minus 12 kilonewton meter. VC is equal to 8 kilonewton and SC is equal to 0. That's all finished. So here we have got the required unknowns. Is it okay? ये समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है? ये प्रॉब्लम मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि यहाँ पर इंक्लाइन मेंबर्स है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इंक्लाइन मेंबर्स रहते हैं तो क्या करना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए कंसीडर किया है कि अगर जॉइंट पर फोर्स एक्ट होता है तो हमने क्या करना चाहिए. टू एक्सप्लेन दीज टू थिंग्स आई हैव कंसीडर्ड दिस प्रॉब्लम. सबसे पहले क्या किया, जो सपोर्ट रिएक्शंस थे, वी हैव डिटरमाइंड सपोर्ट रिएक्शंस एंड वी हैव शोन द करेक्ट डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड्स. फिर उसके बाद मेंबर को सेपरेट किया, जहां पर भी रिजिड जॉइंट थे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल रिएक्शंस. यहां जैसे कंसीडर किया बी पर, यहां उसका अपोजिट किया, सो दैट व्हेन वी विल जॉइन द टू द नेट इज 0. अगर कोई जॉइंट पर फोर्स एक्ट होता है तो या तो वो बीसी पर सी पे बताना चाहिए या सीडी में सी पर बताना चाहिए. आई हैव शोन हियर एट बीसी एट सी. देन मैंने इसका इक्विलिब्रियम लिया. आई हैव डिटरमाइंड दीस थ्री रिएक्शंस. Then I have considered equilibrium of CD. I have determined the another three required unknowns. So I have got all the required unknowns. Is it okay? ये समझ में आया है क्या? Will someone please answer in the chat box? Please reply in the chat box. ये समझ में आया है कि मैंने क्या किया है? Is it right? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स. तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने क्या बताया है ये? ओके फाइन, थैंक यू अरसलान. क्योंकि कैसे है कि दिस इज द ओनली कम्युनिकेशन टूल व्हाट वी आर हैविंग अवेलेबल नाउ. अगर आप चैट करोगे तो मुझे समझ में आएगा. दैट वाई यू मस्ट कीप ऑन गिविंग मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. अभी क्या होगा, नाउ वी आर नोइंग ऑल दीज आंसर्स. वीपी का वैल्यू कितना है? आई विल राइट हियर वीपी इज इक्वल टू 8. व्हाट इज वैल्यू ऑफ एमबी? MB is equal to minus 36. What is HB? HB is equal to minus 12. So HB is equal to minus 12, MB is equal to minus 36, and VB is equal to 8. What about here VC? VC I have got positive, so it is equal to 8. AC it is 0. What is MC? It is equal to minus 12. So it is MC is equal to minus 12, AC is equal to 0, and VC I have got positive, so it is equal to 8. That's all finished. So here I have shown all the reactions. All the forces are available now. अब क्या करना चाहिए? अगर जो भी निगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव के साथ करेक्ट डायरेक्शन में लिखिए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस. हम निगेटिव में नहीं चल सकते हैं एज्यूम के साथ. नाउ करेक्ट देम एंड देन राइट द पॉजिटिव वैल्यू. हाउ? ये जो मेंबर ए बी है, दिस इज दिस इज 12. This is 8. Horizontal कितना आया है? minus 12. I had assumed left and I have got minus. इसका मतलब this must be acting right. So it is 12. VB I had assumed up. I have got positive value. So this is okay. 8. Moment I had assumed clockwise. I have got minus value.
it means that it is acting anti-clockwise. So this is 36 kilonewton meter. Is it okay? Next for this member BC. BB I had considered down, I have got positive value. So this is right. This is 8. This is for AB member. Now this will be for BC member. कितना है यहाँ पर 8 डाउन. It is positive. Assume direction is right. ये यहाँ की ये बात कर रहे हैं. HB I had assumed right. I have got minus value. So it means that it must be acting left. So this is 12. I had considered NB anti-clockwise. I have got minus value. It means that this must be acting clockwise at B. And this is equal to 36 kilonewton meter. This is moment. Okay. Now at C, VC I have got positive. So the assumed direction was up and it is right. HC I have got minus value. लेकिन यहाँ पर दो फोर्सेस है ये. HC भी है और ये this 12 भी है. If it is 0, but here this 12 is also acting. This is acting left. It is 0 and 12. So the summation of the two is 12 only. So here there is a force of 12. I had considered clockwise moment, but it is minus 12. It means that this must be acting anti-clockwise. So this is anti-clockwise 12 kilonewton meter. Okay. What is next now? CD. D पर there is only one force acting 8. यहाँ पर कैसे AC 0, there is no horizontal force acting. Vertical I have got positive value, so this assumed direction is right. It is 8. Couple I had assumed anti-clockwise. I have got minus value. It means that it is not anti-clockwise, but it is clockwise. और magnitude कितना रहेगा 12. Finish. So I have got all the required values. Now I can sketch the shear force and bending moment diagram. I have got all the required values. How you can sketch the shear force and bending moment diagram now? मैंने क्या किया, पहले सपोर्ट रिएक्शन डिटरमाइन किया, फिर मेंबर्स को ब्रेक किया, अलग अलग स्ट्रक्चर को अलग अलग मेंबर्स में इंटरनल फोर्सेस अज्यूम किया एट द रिजिड जॉइंट्स, कोई भी रैंडम डायरेक्शन अज्यूम किया, देन आई हैव गॉट द रिक्वायर्ड वैल्यूज, फिर मैंने इसको करेक्ट करके द करेक्ट स्केच आई हैव स्केच्ड हियर. नाउ सी, नाउ दिस इज ए इंक्लाइन मेंबर, दिस इज ए इंक्लाइन मेंबर. और कैसे रहेगा फोर्स? इफ इट इज दिस इज द इंक्लाइन मेंबर, द एक्सियल फोर्स विल एक्ट हियर, द शेयर फोर्स विल एक्ट हियर. तो पहले मुझे फोर्सेस को अलोंग द मेंबर एंड परपेंडिकुलर टू द मेंबर रिजॉल्व करना पड़ेगा. व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू रिजॉल्व द मेंबर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर. आई हैव टू रिजॉल्व द मेंबर्स along this axis. So those will be the axial forces. Perpendicular to the member, those will be the shear forces. So I have to resolve these members along and forces along and perpendicular, so as to get the axial force and shear force. How to resolve? Say this is member AB. This is the force acting 12. So what is the angle made by this member with the horizontal? How that can be determined? This vertical is 4 and this horizontal is 1.5. How much this angle will be? देखिए, अगर ऐसे मेंबर इंक्लाइंड होते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है. अगर मेंबर इंक्लाइंड होते हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है. How we can determine these angles? The vertical is 4, the horizontal is 1.5. How much this angle? चलिए मुझे एंगल दीजिए. Please give me the angle. How will you get? It will be 10 inverse of 4 by 1.5. कितना रहेगा? How much this angle is? प्लीज सिट विद द कैलकुलेटर. मेरे पास आंसर अवेलेबल नहीं रहते, मैंने पहले बोला है, मेरे पास क्वेश्चन है सिर्फ. आप जो आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व. प्लीज आंसर. हाउ मच दिस एंगल इज? 10 inverse of 4 by 1.5. What is the angle? 69.43. Thank you, Arsalan. So this angle is 69.43 degrees. अगर ये है तो this is the opposite angle, 69.43 degrees.
So how will I get the force along this member and perpendicular to it? This is perpendicular and this is along. तो along वाला component कितना हो जाएगा? If I resolve this force here, it will be 12 cos 69.43. If I resolve this 8 kilonewton force along this, so वो भी ऐसे downward ही जाएगा. So that will be ऐसे ही. So it is plus कितना रहेगा ये? 8 sin of 69.43. This is इसका कंपोनेंट ये है और इसका कंपोनेंट ये है. Add the two components, I will get the net force here. What about the perpendicular component? इसका कंपोनेंट अगर इधर जाएगा तो that will go up और इसका कंपोनेंट अगर देखेंगे तो that will come down. ये अप साइड में कितना रहेगा? 12 sin of 69.43. Because this is the angle, I want to resolve it here. So it is sine component. और यहाँ पर अगर मुझे रिजॉल्व करना है इसको ऐसे, तो ये एंगल 90 माइनस दिस हो जाएगा. दिस एंगल विल अगेन सेम 69.43. So this angle will be again 69.43 degrees. So it will be 8 cos of 69.43 degrees. So what is the total component along? What is the total component perpendicular to this member? Similarly यहाँ का देखिए ये 12 है. I will transfer this here. तो यहाँ पर ऐसे फोर्स रहेगा और ऐसे फोर्स रहेगा. This is 12, this is 8. अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो दिस एंगल इज सेम हियर जो यहाँ का एंगल था. करस्पॉन्डिंग एंगल्स 69.43 डिग्री. सो द कंपोनेंट अलोंग विल बी, दोनों एक ही साइड में रहेंगे. 69 कितना रहेगा ये? 12 cos of 69.43 प्लस 8 sin of 69.43. इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर रहेगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर रहेगा. इज इट राइट? दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल गो अप, दिस विल डाउन. तो अगर ये यहां से एंगल दिए तो इधर रहेगा ये 12 sin of 69.43. This will be because the angle here is 69.43. It is 90 minus, so again it will be 69.43. So it will be 8 cos of 69.43. So this is how I can have the forces components along and perpendicular. ये और यहाँ पर अगर ये बड़ा रहेगा 12 sin of 69.43, so it will act up. अगर ये बड़ा रहेगा, so I have to take the difference of the two, whichever is greater, accordingly I have to show the direction. चलिए, how much this force is? The force which is acting along, it is summation of these two, 12 cos of this plus this. चलिए ये मुझे बताइए कितना था ये समेशन. ये फोर्स को मैंने along रिजॉल्व किया because I want to have the axial forces, I want to have the shear forces, I want to have the bending moment. Axial force is nothing but a force which is acting along the axis of the member. So these forces are to be resolved along the axis. These forces are to be resolved perpendicular to the member. जो perpendicular रहेगा वो shear force देगा, जो along the axis रहेगा वो axial force देगा. So how much this total force is? 12 cos of 69.43 plus 8 sin of 69.43. How much this total is? 4.22. अच्छा, 11.23. Thank you. So it is 11.23 kilonewton and it will be acting up and that will be 4.22 kilonewton. Is it right? Please confirm this whether I have write it correct. Okay. Is it correct? Summation of these two, 12 cos of 69.43 plus 8 sin of 69.43. Is it 11.23? Yes, sir. Okay, fine. Thank you, Arslan. So I assume these answers as okay. It is 11.23. इसको vertical resolve किया तो ये up रहेगा, ये down रहेगा. So I have to take the difference of the two. So I have got here. What about here? If I resolve these two along, so again इसका summation रहेगा. So it will be the same thing. This will be equal to 11.23 kilonewton. और फिर यहाँ पर ये greater रहेगा, ये smaller रहेगा. So now the shear force will be acting down here. And that will be equal to 4.22 kilonewton.
So the forces which were acting along and vertical and horizontal are resolved along and perpendicular. Forces which were acting vertical and horizontal are resolved along and perpendicular. और यहाँ पर एक couple as it is रहेगा. So this is the couple 36. Is it okay? Now we have got the answer. Now we can sketch it very easily. पहले मैंने ये member consider किया जो axial force is nothing but the force which is acting along the axis of the member. So मैंने ये forces को along the axis resolve किया. ये forces को along the axis, ये forces को perpendicular to the member, ये forces को perpendicular to the member I have resolved, and then accordingly I have done the sum. So I have got these as the answers. Okay, fine. What about for this? ये तो already horizontal vertical. I need not to worry about this member BC. क्योंकि member is horizontal, the forces acting either along the axis or perpendicular to the member, so need not to worry. यहाँ पर फिर मुझे चाहिए forces along the axis and perpendicular. See, this is how the force is acting. मुझे ये force को ऐसे resolve करना पड़ेगा. Is it okay? अगर मैं इसको इधर resolve करता हूं तो that is along. उसके perpendicular resolve करता हूं तो that is perpendicular to that. Along the axis and perpendicular to the axis. कितना forces है? What is the angle? See, this angle is again यहाँ पर कैसा था? It is the same thing. The angle here will again be 69.43 क्योंकि ये ऐसे frame था. This is again 1.5 and this is 4. So this angle will also be equal to 69.43. This angle is 69.43 degrees. It is 90 minus that. So again this will be equal to 69.43 degrees. Because this is the axis of the member, it is perpendicular to that. So if it is 69.43, it is 90 minus that, so again it will be 69.43. अगर ये 69.43 है, if I resolve it along this and perpendicular, तो ये component रहेंगे. If I resolve here, it will be 8 cos of 69.43. It will be 8 sin of 69.43. आपको forces resolve करने आना चाहिए. This is the force, here is the angle. अगर angle की साइड में जाते हैं force लेकर, then it is cos and see. अगर मैं इसको rotate करता हूं तो it will be acting up. ये arrow को अगर मैं rotate करता हूं towards the joint along the axis, so it will be again acting up. And as the angle is given with this axis and I am resolving on the other side of axis, so it must be sine component. So what are these forces? ये मुझे forces चाहिए along and perpendicular. How much this force is? 8 cos of 69.43. 7.48 for 8 sin of. Achha, okay. It is 7.48. And what about here? 8 cos of 69.43. 2.81. Fine. Thank you. So this is 2.81. आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसके रेफरेंस में हमारा सॉल्यूशन आएगा. व्हाट अबाउट हियर? अब यहां पर भी अगर मैं देखता हूं तो दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, इट इज वर्टिकल, आई हैव टू रिजॉल्व इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर. ये देखते हैं तो दिस इज द अल्टरनेट एंगल 69, सो दिस विल आल्सो बी 69.43. इट इज 90 माइनस दैट, इट इज 69.43. तो ये कंपोनेंट रहेगा, इट विल बी 8 cos of 69.43 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट मींस अलोंग द एक्सिस ये रहेगा 8 sin of 69.43. देखिए ये 8 sin था तो ये भी 8 sin है, so it is the same value here. How much it will be? 7.48. This was acting up, so this is acting down, so here it is. How much it is? जितना यही है 8 cos of, तो 8 cos of यही है, it is 2.81. और यहाँ पर क्या है? क्लॉकवाइज कपल भी है, so this is the clockwise couple. What is the magnitude? 12. Finish. We have done with the required values. करेक्ट है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब मेंबर इंक्लाइन हो जाता है तो उसमें जो भी फोर्सेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, ऑल दोस फोर्सेस वी नीड टू रिजॉल्व अलोंग एंड परपेंडिकुलर. So we have resolved the forces along and perpendicular. Now we can sketch the axial force diagram, shear force diagram and bending moment diagram. What will be the axial force diagram here? This is the axial force which is acting along the axis of the member. It is tensile in nature. So I will sketch here.
द मैग्नीट्यूड इज 11.23 टेंसाइल, फिर यहां से यहां तक कुछ नहीं है, उसके बाद फिर ये वापस नीचे आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में. सो हियर दिस इज टेंसाइल फोर्स. दिस इज एक्सियल फोर्स डायग्राम AFD, टेंसाइल इन नेचर, है ना. मैंने पहले बोला अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो हम इसके अंदर खड़े रहकर देख रहे हैं. तो ये अगर यहाँ पर खड़े रहकर देख रहा हूं तो दिस इज गोइंग अप, दिस इज द शेयर फोर्स गोइंग अप 4.22, देन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग हियर, यहां से यहां तक, then there is a 4.22 down. So here it is, this is positive, it is 4.22, it is also again here 4.22. This is shear force diagram. Is it okay? Now bending moment diagram. अभी अगर मैं यहां से देखता हूं तो there will not be any bending moment of this, there will be moment because of this 4.22. So what is the bending moment here at any distance x? Because of this 4 there is no moment here, it will be 4.22 multiplied by x. कहां तक? Before this point. This is the bending moment at any distance x. So it means that the bending moment varies with x, so the variation is linear. Say अच्छा ये distance कितना रहेगा? How much this will be? अगर ये ऐसे frame है, this is 1.5 meter, this height is 4 meter, so what is length of this member? It will be under root of 1.5 square plus 4 square. What is length of this member? Because this equation is true for A to B. What is the length of A to B? Under root of 5 square plus 4 square. कितना रहेगा? How much that distance is? Under root of 5 square plus 4 square. I want to have the length of my member. What is length of the member? Under root of 5 square plus 4 square. 4.37. So this is 4.37 meters. So this equation is true for x is greater than 0, for greater than or equal to 0 and less than 4.37 or equal to. तो कितना रहेगा? यहाँ से वेरिएशन इज लीनियर एंड सी, ये अगर ऐसे मेंबर है, यहाँ फोर्स है तो इट विल प्रोड्यूसिंग, अगर ऐसा सेक्शन रहता है तो ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहता है. So it is 4.22 multiplied by 4.37. कितना आता है? देखिए 4.22 multiplied by 4.37. How much it is? $18.44. तो कैसे चलेगा? ये तो 36 है, डेट मस्ट कम टू 0. यहां से यहां तक ऐसे मूवमेंट जाएगा तो फिर ये वापस 0 पर आना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन देखी, ये मूवमेंट ऐसे, ये मूवमेंट अपोजिट किया तो इट मस्ट कम टू 0. नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये मूवमेंट रॉन्ग है या ये वैल्यू रॉन्ग है, आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है. इट मींस दैट यू हैव डन सम मिस्टेक समवेयर. क्योंकि जब मैंने यहाँ पर अभी 16 पॉइंट समथिंग आता है तो या 18 पॉइंट समथिंग 18.44 और यहाँ पर भी फिर सेम आना चाहिए, दैट हैज टू कम टू 0. अगर नहीं आ रहा है तो देयर इज सम मिस्टेक. व्हेन यू हैव डन द मिस्टेक, कहां मिस्टेक किया है? Where have you done the mistake? कैसे रिजॉल्व किया आपने? यहां पर जो फोर्सेस था, हाउ मच वेट द फोर्सेस हियर? दिस हॉरिजॉन्टल वाज 12, दिस वर्टिकल वाज 8. तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट मुझे बताइए कितना रहेगा? दिस विल बी 12,
ये एंगल कितना था, ये था 69.43 अगर आपने बताया, तो दिस विल बी 12 cos ऑफ, cos नहीं ये रहेगा, तो 12 sin ऑफ 69.43, so it will be 8 cos of 69.43. कितना आंसर आता है? So something is wrong. ये 4 divided by 1.5 कितना एंगल आ रहा है? How much this is? मुझे लगता है वो वर्टिकल कंपोनेंट डिटरमाइन करने में मिस्टेक किया है आपने। 12 साइन ऑफ, 12 साइन ऑफ, अच्छा दिस इज 11.23 and what about here 8 cos of 69? How much this is? ये कितना होता है? 8 cos of 69.43, 2.81. So this is 2.81. If I take the difference of these two, this is acting up, this is acting down. So it is 11.23 minus 2.81. So that is nothing but 2, 12, 4 and it is nothing but 8. So it is 8.42. तो यहाँ मिस्टेक किया है, it must be 8.42. तो यहाँ पर भी 8.42 होना चाहिए, क्योंकि it was the same thing. Now you see, it is 8.42 multiplied by 4.37. Is it 4.37? ये मुझे बताइए, ये भी मुझे डाउट है। 1.5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ रहा है? So now it will be 8.42. तो यहाँ पर शेयर फोर्स आ जाएगा 8.42. This will again be 8.42. How much this length is? Under root of 5 square plus 4 square. फोर 4.27. तो फिर अभी पहले क्या 4.37 मुझे बताया, so it must be 4.27. So it must be 4.27. If you multiply these two, अभी कितना आएगा देखिए, now it must be 36. बैलेंस होना ही चाहिए. How much it is? 8.42 multiplied by 4.27. What is answer? 8.42 multiplied by 4.27. Moment will be at this end. $35.96. So whatever that very small difference is, that must be because of approximation. So I consider that as 36. तो यहाँ पर 36 आएगा. When I will put x is equal to 4.27, the bending moment is 36. और फिर ये 36 down है यहाँ पर. So this is down because it is in the opposite direction, and then it is 0. This is 36 here. It is BMD, the bending moment diagram. तो अगर कोई इंक्लाइन मेंबर आता है तो हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है. हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेंबर्स रहते हैं तो काम बहुत आसान रहता है. अगर कोई इंक्लाइन मेंबर आ गया तो हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया. नाउ सी, ये तो हमने स्केच कर दिया है, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. नाउ फॉर दिस, व्हाट आर द एक्सियल फोर्सेस? 12. सो दिस इज एंड टेंशन. दिस इज 12. यहां तक भी 12 रहेगा, देन इट विल कम टू 0. दिस इज टेंशन. इट इज एक्सियल फोर्स डायग्राम. व्हाट अबाउट शियर फोर्स डायग्राम? दिस 8 इज एक्टिंग डाउन. फिर यहां तक कुछ नहीं है, फिर इट इज 8 इज एक्टिंग अप. दिस इज माइनस, इट इज 8 किलो न्यूटन. एंड दिस इज शियर फोर्स डायग्राम. नाउ व्हाट अबाउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? देखिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे पॉजिटिव रहेगा और ऐसे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव. सो दिस बेंडिंग मोमेंट 36. देखिए, ये ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ऐसे जाएगा अबाउट दिस पॉइंट. सो इट हैज टू बी अप. दिस इज 36.
जैसे जैसे इधर आते रहेंगे द बेंडिंग मोमेंट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पर सी पर भी एक्ट हो रहा है. व्हाट अबाउट द बेंडिंग मोमेंट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ सी? इट विल बी 36 माइनस, क्योंकि ये 8 की वजह से माइनस रहेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस इज 4, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी 12. 36 minus 8 4 जा 8 4 जा 32, so it must be 4. तो यहाँ पर 12 कैसे आया है? 12 आना चाहिए आंसर. If there is any mistake here also, अच्छा, this is not 3 meter, this is it is not 4 meter, this is 3 meter, so it will be 8 3 जा 24, so it means that it is 12. तो यहाँ पर 36 है, यहाँ आते आते 12 हो गया है, then this 12 is down, so it will come to 0. This is positive. This is the bending moment diagram. It is just at left of C, or at C it will be 12 minus 12 will be equal to 0. यहाँ पर 12 है, तो यहाँ तक आने तक ये पॉजिटिव 12 रहेगा, then this is minus 12. सी देखिए ऐसे है, so this is minus 12, so that will come to 0. This is the bending moment diagram. So we have sketched the axial force diagram for this inclined member AB. We have sketched the shear for axial force diagram, shear force diagram, and bending moment diagram for this horizontal member. Now we need to sketch for this inclined member. और ये स्केच करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. How to get this required unknown? Axial force, it is 7.48 and it is compressive. So I will sketch here 7.48 and I will write here compressive 7.48. This is axial force diagram. What about shear force diagram? मैं अंदर से देख रहा हूँ, इधर से sketch करूंगा, so it will be down. So this is the shear force diagram. First it is down, फिर there is no force acting here, ये, फिर this is up, ये 2.81. So this is 2.81. It is minus, this is shear force diagram. Now bending moment, ये अभी देखिए ये मोमेंट ऐसे है, इसका मतलब दिस मोमेंट विल गो दिस वे, तो यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट रहता है पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. और यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं है, तो इट मस्ट बी 0 हियर. सी कैसे रहेगा? 12 माइनस, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ डी पर, तो व्हाट इट विल बी? माइनस 2.81 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच द लेंथ वाज? 4.27 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 4.27, so this will be 12 और ये भी 12 ही आ जाएगा, देखिए, so it must be equal to 0. so यहाँ से and the bending moment variation is linear, क्योंकि बीच में कोई यूडियल और कोई दूसरा लोड नहीं है, यहाँ कपल है, and because of this concentrated load the variation will be linear. So this is positive and this will be 12. Is it right? Is it okay? Yes, it is right. ठीक है, ये समझ में आया है क्या? Is it all right? This is how we can sketch. इंक्लाइन मेंबर आता है तो हमारा काम बढ़ जाता है. मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए लिया है कि इसमें मेंबर्स इंक्लाइन है और यहाँ पर एक जॉइंट पर फोर्स एक्ट होता है. अगर जॉइंट पर फोर्स एक्ट होता है तो क्या करना चाहिए? फॉर दैट पर्पस आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. क्या करेंगे? शैल वी कंक्लूड लेक्चर हियर? एक प्रॉब्लम और बाकी रह गया, सो दैट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. मैंने असाइनमेंट अपलोड किया है. I have uploaded assignment in the Google Classroom. वो असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, मुझे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, पहले सॉल्व करके मुझे पोस्ट कीजिए. लेट अस सी इफ दोस आर राइट, देन ओनली यू अपलोड, क्योंकि बहुत सारा पिछले असाइनमेंट में भी रॉन्ग सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है. प्लस कुछ स्टूडेंट ने तो अभी तक सबमिट भी नहीं किया है. दैट इज नॉट फेयर. सो आई एम कंक्लूडिंग लेक्चर हियर. Remaining question will do in the next class. एक प्रॉब्लम है, उसके लिए 15 मिनट लगेंगे और उसके बाद we will start the last topic of the module as far as my part is concerned. That is regarding the Bettis and Maxwell's reciprocal theorem for calculation of deflection, for determining the deflection.
Betti's and Maxwell reciprocal theorem. Okay, that we'll do in the next class. 223. 223 कोई नहीं ले रहा है तो मैं ले लेता हूँ. I will inquire with Satya madam. If she is not taking, then I will take. Okay, so that we will conclude this part. कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे के लिए भी लेंगे तो we can conclude. I will talk to her. Thank you.